Good morning, children. This is part 2 of chapter 13 Manufacturing Industries. Today we are going to continue with agro based industries. In the last part, we studied about cotton textile industry. Today we are going to continue with the remaining agro based industries. So, children, the next agro based industry which we are going to study is jute textile industry. Now, children, from where do we get jute? Jute is extracted from the bark of white jute plant. Okay, jute fibers are extracted and then they are purified, or you can say the impurities are removed in the running water. So it is also known as golden fiber because it is of golden color. So jute is second ranked major industry of India. That means जूट इंडस्ट्री जो है वो सेकेंड पोजीशन पर आती है इंडिया में. फर्स्ट पोजीशन किसकी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. देन कम्स द जूट इंडस्ट्री. नाउ इफ वी लुक at India's position in the world in terms of production of jute, then India holds first place in the production of jute and goods made from jute. वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट प्लेस पर आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स और इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट. ओके, नाउ इफ यू लुक एट एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखें, इंडिया इज एट सेकेंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट. फर्स्ट कंट्री जो बहुत एक्सपोर्ट करती है जूट के प्रोडक्ट्स वो है बांग्लादेश. तो इंडिया उसके बाद आता है. दैट मीन्स इंडिया इज एट सेकेंड प्लेस. फर्स्ट इज बांग्लादेश, देन इंडिया इज़ एट सेकेंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. दैट इज़ हमारी कंट्री से भी एक्सपोर्ट होते हैं जूट के प्रोडक्ट्स, बट वी स्टैंड एट सेकेंड पोजीशन. नाउ ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, जितना भी जूट का प्रोडक्शन होता है कंट्री में, वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है. दैट इज़ इट प्रोड्यूसेस 80%, and Andhra Pradesh produces about 10%, and the rest production, that is rest 10%, is produced by Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Assam and Tripura, these regions. Okay, coming to next, much water is needed to purify jute. बहुत पानी चाहिए होता है जूट को साफ करने के लिए. सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. अब जहाँ पानी अवेलेबल होगा वहीं पर ही मिल्स हम लोकेट करेंगे, वहीं पर ही मिल्स बनाई जाएंगी, ताकि जब जूट को साफ़ करना पड़े तो पानी अवेलेबल हो. पानी अच्छी क्वांटिटी में होगा तो हम अच्छे से साफ़ भी कर पाएंगे. सो दिस इज़ द रीज़न वाई most of the mills are located on the bank of Hooghly River, and this Hooghly River is in West Bengal. As we just now read that 80% जो प्रोडक्शन आता है वो वेस्ट बंगाल से ही आता है जूट का. So that is why most of the mills are located on the bank of river Hooghly. Now why this industry has flourished in West Bengal? This industry is more developed in West Bengal due to चीप लेबर फोर्स. वहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल है और वहाँ पे जो वेजेस पे करते हैं, इस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो वेजेस होंगी वो बहुत ही लो होंगी. दैट इज़ चीपली अवेलेबल होंगे. उनको इतने हाई वेजेस हमको पे नहीं करने पड़ेंगे. देन इज़ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज. उनको बैंक फैसिलिटी भी है, वहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है अच्छे से. पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटी मीन्स when the jute products are ready and you have to export the products made from jute, so port facility is also easily available in West Bengal. So this is also the positive point for development of jute industry in West Bengal. Now if we look at present situation, the demand for jute has decreased because of other options in packing material for goods. आज जो डिमांड है ना जूट की वो बहुत ही कम हो गई है बिकॉज मैनी पैकेजिंग मटीरियल्स आर देयर नाउअडेज. प्लास्टिक इज़ बीइंग यूज्ड, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर पैकिंग. सो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर jute. So due to this, jute industry is facing such problems like more cost of production and decreasing demand of jute in international markets. So children, what do you mean by cost of production? See, cost of production means total sum of money needed for the production of jute products. जब हम कोई भी प्रोडक्ट
अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको बनाने में जितना खर्चा हो रहा है, दैट इज़ हम रॉ मटेरियल्स लेकर आएंगे, हम लेबर को वेजेस देंगे, या जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, अब वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोप अप नहीं कर पा रही हैं। और दूसरी बात है कि दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरे पैकेजिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए, तो जूट की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कम हो गई है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक, जूट इंडस्ट्री। The next agro-based industry which we are going to study is silk textile industry. Now, silk is obtained from silkworms. So, silk production has a long tradition. Silk production का हमारी कंट्री में जो ट्रेडिशन रहा है वो बहुत ही लंबे टाइम से रहा है. That means ये ओल्डन टाइम्स से हम सिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं. Now, if we talk about India's position in world in silk production, तो हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड पोजीशन पर आती है आफ्टर चाइना. दैट मीन्स फर्स्ट प्रोडक्शन के टर्म्स में जो कंट्री आगे है वो है चाइना इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क, और इंडिया जो है वो सेकेंड है वर्ल्ड में इन प्रोड्यूसिंग सिल्क. सो कमिंग टू टाइप्स ऑफ सिल्क इन इंडिया, 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड. 4 तरह की सिल्क हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है. फर्स्ट वन इज़ मलबेरी, then is eri, then is tussar silk, then is muga silk. These 4 are the types of silk which are produced in our country. Now let's see how many mills are there in India today. Today there are about 300 silk weaving mills in India. Silk weave करने के लिए mills जो बनाई गई हैं वो कितनी है? 300 silk weaving mills हैं अभी जो function कर रही हैं इंडिया में. Now coming to the states which are producing more and more silk. So major states producing silk are Karnataka, Madhya Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Punjab and Jammu Kashmir. These states produce more silk in more quantity. Now looking to the export of silk. Silken clothes are exported to Europe, Africa and Gulf countries. हमारी कंट्रीज से सिल्क के क्लोथ्स इन सब कंट्रीज़ में जाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूरोप, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज़. Beside these are also exported to Germany, Singapore, USA, Kuwait, Malaysia and Russia. ये भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिल्क क्लोथ एक्सपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्रीज़ से. ओके, नाउ इफ़ वी लुक एट international level, in international market, Indian silk is facing a tough competition from China. इंडिया की जो सिल्क है उसे बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. किसके साथ? चाइना के साथ, बिकॉज चाइना स्टैंड्स फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग सिल्क. तो चाइना से हम compete कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिल्क इन इंटरनेशनल मार्केट्स. So this was all about silk industry. The next agro-based industry is woolen textiles industry. Now, as a cottage industry, the history of woolen textile industry is very old. जब पहले स्टार्ट की गई थी वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो वो बहुत ही छोटे स्केल पर स्टार्ट की गई थी. सो इट वाज टर्म्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री. बट नाउ ड्यू टू टेक्निक्स एंड मशीनरीज this industry has developed very well. Now mills are located in many states in India. So maximum woolen mills are in पंजाब. ज़्यादा से ज़्यादा वुलन मिल्स जो हैं वो पंजाब में है. नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र. उसके बाद अगर हम देखें पंजाब के बाद तो कोई स्टेट है तो वो है महाराष्ट्र जो वुलन मिल्स में सेकेंड आ रहा है. देयर आर वुलन मिल्स इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो. वुलन मिल्स उत्तर प्रदेश में भी हैं बहुत सारी. अहमदाबाद एंड जामनगर इन गुजरात आर द सेंटर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स. अगर गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद और जामनगर यहाँ पर वुलन क्लोथ्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे. दैट इज़ ये सेंटर माने गए हैं. अहमदाबाद एंड जामनगर आर कंसिडर्ड टू बी द सेंटर फॉर वुलन क्लोथ्स. अदर मेजर सेंटर्स आर बीकानेर एंड जयपुर इन राजस्थान. राजस्थान में देखें तो बीकानेर और जयपुर ये दोनों प्लेसेस हैं जहाँ पर वुलन क्लोथ्स मिलेंगे. देन श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर. अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो श्रीनगर
वहाँ पर वुलन क्लोथ्स या वूल के प्रोडक्ट्स जो है हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं। एंड बेंगलुरु इन कर्नाटक, साउथ में आ जाए तो फिर कर्नाटक में बेंगलुरु बहुत फेमस है फॉर प्रोड्यूसिंग वुलन क्लोथ्स। नाउ इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वुलन कारपेट्स, वूल के कारपेट्स भी इंडिया बनाती थी। ओके, कमिंग टू एक्सपोर्ट्स, वुलन क्लोथ इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। हमारी कंट्री में जो वूल के क्लोथ बनते हैं, वुलन क्लोथ्स जो बनते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और रशिया में। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। So, this was about woolen industry. The next agro-based industry which we are going to discuss is synthetic textile industry. So, synthetic, as the name suggests, you might be familiar with कि इसमें mixed quantity में cotton और synthetic fiber का use किया जाता है. So, the cloth made from synthetic fiber made by man is strong, durable and does not retain wrinkles. Hence, this industry has developed very much. जो इससे क्लोथ बनता है सिंथेटिक फाइबर से, क्योंकि ये मैनमेड फाइबर है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और रिंकल्स को रिटेन नहीं करता। दैट मीन्स रिंकल्स नहीं होते उस कपड़े में। मीन्स यू डोंट हैव टू आयरन दैट क्लोथ, इट इज़ wrinkle free cloth. So this industry has developed very much. The cotton fibers are mixed with synthetic fibers to get mixed variety of cloth. अब ये सिंथेटिक टेक्सटाइल जो है वो कैसे बनता है, सिंथेटिक मटेरियल जो है वो कैसे बनता है, कॉटन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स के साथ मिक्स किया जाता है, तब जाके सिंथेटिक क्लोथ बनता है। नाउ इफ वी लुक एट द मेन प्रोड्यूसर्स, मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा. So these are the main producers of this industry. That means synthetic textile industry जो है वो फ्लरिश हुई है यहाँ पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु में. Now apart from this, other centers which are famous or which are main producers are Surat, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदी नगर एक्सेट्रा. ये भी सेंटर्स हैं जो सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज शुगर इंडस्ट्री. मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन जूस इज़ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया. जैगरी मीन्स गुड़. शुगर केन जूस में से जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही पुराना रहा है हमारी कंट्री में. Now, sugar industry stands second after textiles in agrarian industries in India. अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमने सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ देखी. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बाद आता है चांस शुगर इंडस्ट्री का. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस. आफ्टर रीपिंग द क्रॉप ऑफ शुगर केन, it has to be squeezed within 24 hours so that the amount of water is not reduced. Otherwise its sugar contents will decrease. अब जब रीप किया जाता है शुगर केन को, दैट इज़ जब फसल कटती है शुगर केन की, तो विदिन 24 आवर्स उस शुगर केन को स्क्वीज़ करना पड़ता है. दैट मीन्स उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि जो उसका वाटर कंटेंट है वो कहीं कम नहीं हो जाए. बिकॉज इफ़ वी स्क्वीज़ आफ्टर 2-3 डेज देन वो सूख जाएगा, गन्ना जो है वो सूख जाएगा, तो उतना वाटर कंटेंट नहीं निकल पाएगा सूखने के बाद. सो दैट इज़ वाई, और उसकी जो मिठास है वो भी चली जाएगी. सो इट इज़ सेड दैट अलॉन्ग विथ वाटर its sugar contents will also decrease. So this is the reason why the sugar factories are located near sugarcane growing centers. इसीलिए sugar factories आप जब भी देखेंगे ना तो शुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स के बाजू में ही रहती हैं. दैट मीन्स शुगर केन की फील्ड होगी जहाँ पर, उसके बाजू में ही शुगर केन फैक्ट्रीज होती हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो. दैट इज़ जैसे ही फसल की कटाई हो तो वो फैक्ट्रीज़ में भेजा जाए शुगर केन को और जल्दी से जल्दी उसका स्क्वीजिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाए. बिकॉज इफ़ द फैक्ट्री इज़ लोकेटेड एट अ फार प्लेस तो लेके जाने में टाइम लगेगा. दैट इज़ वाई sugar factories are located near sugarcane growing centers.
Now let's see where are the sugar factories located in India. Sugar factories are located in Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात एक्सेट्रा। इन सब जगहों पर हम देख सकते हैं कि शुगर फैक्ट्रीज हैं हमारी कंट्री में। दिस इंडस्ट्री इज़ डेवलप्ड इन गुजरात। अब गुजरात में हम रहते हैं तो गुजरात में कहाँ कहाँ डेवलप हुई है? एट बारडोली, गनदेवी, ओलपद, व्यारा, भरूच, कोदीनार एंड तलाला गिर। गुजरात में इन सब जगहों पे ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही डेवलप हुई है। सो विद दिस वी कंप्लीट sugar industry. Now the last industry, which is agro based industry, is paper industry. Now paper is made out of softwood, bamboo, grass, molasses etc. Softwood पता है ना आपको कि जो बार्क होती है ट्री की, अगर वो सॉफ्ट बार्क होगी तो उसमें से पेपर बन सकता है। देन बैम्बू ट्रीज का जो स्टेम होता है उसमें से, ग्रास से या फिर मोलासेस से। मोलासेस आर द रिमेन्स ऑफ आई कैन से शुगर केन। जो गन्ना सूख जाता है ना, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो गन्ना बचता है उसे हम मोलासेस कहते हैं। सी दीज आर द पेपर रोल्स विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, now in our country where it is produced in Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Haryana etc. Okay, all these are the places where we can see that India is producing paper. So with this we complete the paper industry and also the topic agro based industry. Now children, you are given a map on page number 105 which is showing centers of cotton, woolen and silk textile industry. That means you have to mark the places in a map and remember the places, because these places can be asked in board. You have to remember the places which are marked in map for cotton textile industry, woolen textile industry and silk textile industry. Now, I am giving 2-3 examples of cotton textile industry. If you look here in the map, you will find that Ahmedabad is famous, or Ahmedabad is the center for cotton textile industry. Then below Ahmedabad, Rajkot is also marked with black circle, that is the mark for cotton textile industry. Then coming to woolen textile. See, Amritsar and Ludhiana both are showing woolen textile industry. They are represented by a blue triangle. The last is silk textile industry. Now, silk textile industry, if you look at the north of map, you will find that Srinagar is showing silk textile industry. Then Anantnag is also showing silk textile industry. So all these places, I have given only just 2 examples for each industry. You have to remember all the places which are famous as centers for all these industries. So children, with this we complete part 2 of chapter 13, and we will be starting with the topic mineral based industries in part 3 of chapter 13, manufacturing industries. Thank you.